जय भीम दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 371I, द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा, एंड 372 आर्टिकल continuance in the force of existing laws and their adaptations। कौन है? हाँ भैया, किधर जाना है? ये तो पता नहीं भैया किसने कहा था। आप गलत आ गए इधर। तो अभी कुछ दरवाजे पे कुछ लोग आ गए थे, किसी दूसरे के फ्लैट में एंटर कर गए और मेरे घर में भी आ गए थे। तो कोई नहीं, उसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो क्या मैं पढ़ रही थी? 371 आर्टिकल, 371I आर्टिकल, द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा, एंड 372 आर्टिकल continuance in force of existing laws and their adaptation। तो आज मैं इन दो अनुच्छेदों को पढ़ूंगी। 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, और 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन के बारे में। तो पहले इनको इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, दोनों आर्टिकल्स को एक वीडियो के माध्यम से, और फिर दूसरा वीडियो हिंदी में बनाऊंगी, उसमें दोनों आर्टिकल हिंदी में होंगे। तो चले 371I Constitution's Article 370I says about the special provision with respect to the Goa state। तो द स्टेट ऑफ गोवा जो है उसके बारे में इसका विशेष प्रोविज़न है, उसके बारे में मैं बताती हूँ। 371I, द स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा। Notwithstanding anything in this constitution, the legislative assembly of the state of Goa shall consist of not less than 30 members। जो गोवा विधानसभा है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर 30 मेंबर से कम मेंबर्स नहीं होंगे, नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। तो ये बात की जा रही है। अब मैं पढ़ लेती हूँ 372 आर्टिकल, कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशंस।
यानी विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। Constitution's Article 372 says about the continuance in force of existing laws and their adaptation. Number one, notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in Article 395, but subject to the other provisions of this Constitution. All the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority. Number second, for the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India into accord with the provisions of this Constitution. The President may by order make such adaptations and modifications of such law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect such to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not questioned in any court of law. Number third, notwithstanding in clause second shall be deemed. Number A, to empower the President to make any adaptation or modification of any law after the expiration of 3 years from the commencement of this Constitution, or B, number B, to prevent any competent legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause. Explanation first. The expression law in force in this article shall include a law passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution, and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas. Explanation second. Explanation second. Any law passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India, which immediately before the commencement of this Constitution had extra territorial effect, as well as effect in the territory of India, shall subject to any such adaptations and modifications as aforesaid continue to have such extra territorial effect. Explanation third. Explanation third. Nothing in this article shall be construed as continuing any temporary law in force beyond the date fixed for its expiration or the date on which it would have expired if this Constitution had not come into force. Explanation fourth. An ordinance promulgated by the governor of a province under section 88 of the Government of India Act 1935 and in force immediately before the commencement of this Constitution shall, unless withdrawn by the governor of the corresponding state earlier, cease to operate at the expiration of 6 weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly
of that state functioning under clause first of article 382, and nothing in this article shall be construed as continuing as such ordinance in force beyond the said period. तो ये तो हो गया आर्टिकल 372। अब मैं इसका वो पढ़ लेती हूँ कि इसमें जो अमेंडमेंट क्या क्या हुआ है। नंबर 1, inserted by the Constitution, 56th Amendment, Act 1986 S2WEF 30/5th 1987. See the adaptation of Laws Order 1950 dated the 26th January 1950. Gazette of India Extraordinary, page number 449, as amended by the notification number SRO 115 dated the 5th June 1950, Gazette of India Extraordinary, Part 2nd, Section 3, page number 51, notification number SRO 870 dated the 4th November 1950, Gazette of India Extraordinary, Part 2nd, Section 3rd, page number 309, notification number SRO 508 dated the 4th April 1951, Gazette of India Extraordinary, Part 2nd, Section 3rd, page number 287, notification number SRO 1140B dated 2nd July 1952, Gazette of India Extraordinary, Part 2nd, Section 3, P 616/1st, and the adaptation of the Travancore Cochin Land Acquisition Laws Order 1952 dated the 20th November 1952, Gazette of India Extraordinary, Part 2nd, Section 3rd, page number 923, substituted by the Constitution First Amendment Act 1951 as 12 for 2 years. तो ये तो अमेंडमेंट जो भी हुआ होगा उसमें जो भी हुआ है तो ये सब है। सेक्शन पार्ट 2nd, सेक्शन 3rd एंड पार्ट 2nd, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके अंदर जो भी हुआ है उसके बारे में। तो अगला मैं वीडियो पढ़ूंगी हिंदी में, इन्हीं दोनों को अनुच्छेदों को पढ़ के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हिंदी में। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना ना भूलें, उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ें, और पढ़ेंगे तभी हम अच्छे नागरिक बनेंगे और जागरूक बनेंगे। तो इसलिए संविधान पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पर लेकिन अच्छी बुक्स पढ़ें। बाबा साहब ने कहा है ना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनकी बात को फॉलो करें, प्रैक्टिस में लाएं, तभी हम अच्छे नागरिक बनेंगे। थैंक यू। जय भीम।